Cover the wound. Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out. After the wound has healed enough to make infection unlikely, exposure to the air will speed the wound healing. The first word is cover. Cover means dhampna, hide, harmful. Harmful means nuksandeh, damaging. The next word is bacteria. Bacteria means jarasim, germs. Enough. Enough means kafi, sufficient. Unlikely. Unlikely means namumkin, impossible. Exposure. Exposure means खुला छोड़ देना, हवा में खुला छोड़ देना. Or you can say display. Bandages can help. पट्टियां मदद दे सकती हैं, पट्टियां मदद कर सकती हैं. किस चीज के अंदर? कीप द वाउंड क्लीन, जख्म को साफ रखने में मदद कर सकती हैं. एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और नुकसानदेह जरासीम को दूर रखने में. Bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out. पट्टियां जख्म को साफ रखने और नुकसानदेह जरासीम को दूर रखने में मदद दे सकती हैं. The next line is, after the wound has healed enough. जख्म को मुंदमिल होने के बाद, इनके जख्म का थोड़ा बहुत ठीक होने के बाद, to make infection unlikely, जबकि जरासीम ज़दगी का कोई इम्कान ना रहे, तो फिर क्या करें? Exposure to the air will speed the wound healing. जख्म को हवा में खुला छोड़ देना मुंदमिल होने की रफ्तार को बढ़ा देगा. इनके जख्म के ठीक होने की जो रफ्तार है उसको मजीद स्पीडी कर देगा, उसको तेज कर देगा. अब इस पूरी लाइन को हम पढ़ते हैं कि आफ्टर द वाउंड हैज हील्ड एनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, एक्सपोजर टू द एयर विल स्पीड द वाउंड हीलिंग. जख्म को मुंदमिल होने के बाद जरासीम ज़दगी का जब इम्कान न रहे, तो जख्म को हवा में खुला छोड़ देना जख्म के मुंदमिल होने की जो रफ्तार है उसको तेज कर देगा, उसको बढ़ा देगा. द फर्स्ट लाइन इज, bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out. तो इसकी हमने सिंपल इंग्लिश कुछ यूं की है कि the function of the bandages is to save the wound from bacteria and keep it safe from dirt. The next line is, after the wound has healed enough to make infection unlikely, exposure to the air will speed the wound healing. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है कि the wound should be uncovered when it is out of the danger of infection. The wound is recovered soon in open air. तो यहाँ पे exposure to the air के लिए आप देख रहे हैं हमने open air का वर्ड यूज किया, और wound healing के लिए वर्ड हमने यूज किया कि wound is recovered, जख्म का ठीक होना. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिन वर्ड्स को हमने कलर चेंज किया वो किस वर्ड्स की जो है सिंपल इंग्लिश की जा रही है.